Hello, good morning everyone. Today I will continue the session from the last class. जोड़े मैं उधर छाड़ी जाते ठीक अच्छे. So I've been waiting for you all. And जहाँ अच्छे मैं आगे को देखिया. So I think result भी वजीरे बाहर जातला. And we all know that the selection ratio was quite less. जेहेतु post बहुत कम थिला तो selection ratio was selection numbers was quite less. ठीक अच्छे. So what can we do right now? ठीक है रीस्ट्राटेजाइज करिया आगु कौन करियार अछि ठीक अछि तापर हमको ठीक है भाबिया पड़िबो केमिति कोन अप्रोच करिया आंसर को जदी पोस्ट कम थबो सो व्हाट शुड वी डू टू गेट द कट ऑफ पार ठीक अछि सो दिस इज a YouTube batch. Yeah, this is a YouTube batch. We have a good team. हमें देखु जे हम कोन करिया को सो अछंती तापर this others batch is going on YouTube पे जहाँ free मिलुची that's good and that is also premium content एमिति ना कि किछि खराब अछि तापर this is others batch for OCS सुजाता मैडम नो सबल 8 or 9 क्लास थाए so that you can तांकर सबले इंडियन पॉलिटी तापर बे मेंस डिस्कशन चलची and don't miss our class. I mean तांकर too much of content oriented थाए ठीक अछि तापर my classes alternate days आसीबो करंट अफेयर्स थबो प्लस किछि किछि PSIR रिलेटेड थबो ठीक अछि तापर अर्पिता मैम को इकोनॉमिक्स क्लास अछि and she has been discussing MCQs for while तापर मेंस तापर ethics and ethics is very important guys right बिना ethics रे किछि काम चलिबोनी तापर geography Chandan sir is taking then Sudip ma'am is there for science and tech and all that ठीक अछि so this is the trust batch जोड़ा की we have designed for you so OCS prelims is 4500 and the mains combo is 9900 and this is quite both affordable अच्छे एमती ना कि this is that too much of costly and this is rate हिसाब से ठीक अच्छी and ताकि हमें quality content and PDF is providing so good one and any queries then this is the number you can go for it. So this is the mains batch for this 7500 and optional batch is 4000. Okay. This is the mains batch 7500 and optional batch is 4000 ठीक अछि we are providing such optionals ताकि जोड़ा कि तुमको beneficial हबो ठीक अछि and एटा थिला कि हमरो slides जोड़ा कि it will be useful for your classes ठीक अछि मते खाली कि जण कहउतले ठीक अछि somebody was saying that it has a doubt that car GDP by 45% by emissions जो doubt थिला particularly the goal for reducing the emission intensity of GDP by 45% by 2030 एटा कार ଗୋଟେ doubt थिला जो कि माने से बुझी पानतले मु कोन कैलकुलेशंस लगाइछली ठीक अछि सपोज 2005 रे for 100 unit of GDP we are emitting 100 units of carbon dioxide है ना carbon dioxide so actual target कौन होचे 2030 रे for same amount of GDP सी कहूँ emission reduction by 45% right जदि 45% हेले केते हबो 100 minus 45 it is 55 right so we have to emit केते 55 units of carbon dioxide ए जिनसडा मु कहतले it is not that emission तुमको लागुतला कि क्वेश्चन नथला कि 55% नो क्वेश्चन शुड बी 55% हबो मतलब 45% रिडक्शन हबो एंड इट शुड बी 55 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेडा मु कली बुझोतली ठीक अछि सो दिस इज द कैश थिला 100 minus 45 45 तापर we have lost hi Pile good morning so be regular in the class आमे बहुत सारा जिंस डिस्कस करिवो आगु so I mean everybody has to
तुमको फिनिश लाइन जीवा को पड़ो सो बी रेगुलर बी पंक्चुअल एंड मु बहुत किसी डेटा प्रोवाइड करी जोटा कि तुमको आपको इम्पोर्टेंट लगे सो मो क्लास इज एट alternate days 9 o'clock so be there ठीक अच्छे सो आई हैव you guys are having the morning coffee है ना so coffee पियो have the sip and try to learn what I'm teaching ठीक अच्छे ISRO's LVM Rock 3 rocket launches GSAT-7R, the Navy's most advanced communication satellite. Why this is important? I should tell you. कहीं जो ISRO जो लॉन्च इतना करची देखो सी एक्चुअली कौन जितने ISRO जितने लॉन्च करता they just tweeted that launch day is for LVM-3 India's heavy lift rocket launched CMS today at 5:26. But ताकू retweet की करची Navy. So से कहूँ जाता कि this is for Navy. But Navy जितना tweet करला it shows that this is for specially designed for the Navy. And this is very heavy satellite. ठीक है GSAT-7R, India's Navy most advanced indigenous developed communication satellite today from Sriharikota. आज टिके तुमको GSLV ऊपर GSLV PSLV satellite communications ऊपर मु किसी जिनसे कही भी which will be very useful for your exams. Prelims exam रे satellite तुम्हारा one day exams रे ये सब GSAT सब पके दियों. So you should be know that तुम को satellite रे कितने टर्न यूज होची को satellite remote sensing पे होची को satellite cartosat पे होची को satellite हमारा communication पे होची you should know that. ठीक अच्छे एटलिस्ट इट गारंटीज दैट तुम मार्क रहिबो कहीं सब बेले मु देखी 2 मार्क्स रे हाय गुड मॉर्निंग ज्ञान महांती है ना सो बी फंक्शन इन द क्लास एंड रहिले इंटरेक्शन कले है ना मते भी भल लागियो तुमको भल लागे एंड इंटरेक्शन थ्रू डाउट ही क्लियर होए राइट सो दिस इज द वन है ना दिस इज द हेवीएस्ट पेलोड टिल नाउ व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द कोडा LVM Mark 3 ठीक अच्छे देखो इंडिया पाखे 3टा सैटेलाइट अच्छे है गोटे है SSLV 1 मिनट गोटे है आई नीड टू रब दिस ठीक अच्छे टिके धर यू शुड नो ठीक अच्छे इंडिया पाखे 3टा सैटेलाइट अच्छे सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल गोटे SSLV आ गोटे है PSLV आ गोटे है GSLV नाउ इट इज बीन टर्म्ड एज LVM Mark 3 ठीक अच्छे Mark 3 जितने डू यू रिमेंबर जितने 2022 रे जितने हमर रशिया यूक्रेन वॉर हेतला सेतरा वन वेब कंपनी थिला ना वन वेब कंपनी वांटेड टू लॉन्च सम सैटेलाइट एंड सी कॉन्ट्रैक्ट काहू देतला सी देतला रशियन स्पेस एजेंसी को देतला बट एट दैट टाइम व्हेन यूरोपियन हैज माने से तो किछ प्रॉब्लम हेतला देन रशिया बैक डाउन करतला इंडिया को से अपॉर्चुनिटी मिलला काहे के one wave satellite 36 satellites थिला and it was amounting to 5.2 ton ठीक अछि and आको प्लेस कोड करिबार थिला आको लो अर्थ ऑर्बिट रे प्लेस करिबार थिला बुझि परछो and that time आमे ताको यूज कोन करलु लो अर्थ ऑर्बिट रे देखो लो अर्थ ऑर्बिट केते हे परिबो तुम कार्बन लाइन टू अराउंड 2000 किलोमीटर तुम कार्बन लाइन जोटा अछि जोटा कि स्पेस कोनती but that to 2000 किलोमीटर आमे को मतलब सेतले 5.2 टन जो सैटेलाइट अराउंड 36 सैटेलाइट थिला ताकू आमे लो अर्थ ऑर्बिट रे यूज करलु लो अर्थ ऑर्बिट पहुंचेलु बाय द हेल्प ऑफ LVM Mark 3 बट एक्चुअली कोड यूज करया था PSLV जेहेतु इट वाज वेरी हेवी सो आमे ताकू वी यूज्ड LVM रॉकेट जोटा कि GSLV कोन ठीक अछि सेट नोमेनक्लेचर चेंज हला काई कहला देखो आई मीन द प्रॉब्लम इज दैट आमर जो PSLV अच्छी ना जो PSLV अच्छी ना तार मैक्सिमम कैपेसिटी अच्छी 1.75 टन और सी कोड नहीं जो सी लो अर्थ ऑर्बिट को ही नहीं परिबो ठीक अछि आमर जो LVM अच्छी तार कैपेसिटी हला 4 टन टिल जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है ना जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट आउ 8 टन टिल लो अर्थ ऑर्बिट एटा हला मैक्सिमम तार एटा दिस वैल्यू इज वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि दिस वैल्यू इज वेरी इंपोर्टेंट काली जदी एग्जाम रे पचार देबो PSLV एंड LVM रो हाईएस्ट क्षमता केते दिस वन केते PSLV रो 1.75 टन टिल लो अर्थ ऑर्बिट LVM Mark 3 रो 4 टन टिल जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट एंड 8 टन टिल लो अर्थ ऑर्बिट सेते पई जेतला वन वेव जो सैटेलाइट यूज करले ना वन वेव जो सैटेलाइट जो पहुंची पारतला दैट वाज हैविंग अराउंड वेट ऑफ 5.65 टन
बुझी पारछो सेति पे से माने सेही एलबीएम टा यूज करथले ठीक अछि एटा थला त नोमेनक्लेचर आ गोटे सैटेलाइट अछि हमर होला एसएसएलवी हला एसएसएलवी आज का डेट रे एवरी कंपनी हला तांको जल्दी सैटेलाइट पहुंचेबार अछि ठीक अछि एवरी कंपनी हैज टू पुट सैटेलाइट जल्दी एंड तुम जान जो पीएसएलवी यूज होय ना इट टेक्स अराउंड 3 मंथ्स है ना तुमको पीएसएलवी को ना असेंबल करे पे 3 मास लागे एंड जीएसएलवी के असेंबल करे पे 4 मंथ्स लागे बुझी पारछो एंड एसएसएलवी होची स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल स्मॉल सैटेलाइट आर मैक्सिमम कैपेसिटी किते है 500 टन रो 500 टन बुझी पारछो तो हाँ 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 यस ठीक अछि एसएसएलवी रहला मैक्सिमम 500 टन माने 500 केजी कथा कहू सॉरी 500 केजी तो एसएसएलवी जतो लॉन्च हो इट कैन टेक अराउंड मैक्सिमम 500 केजी तो ता भीतर कोन हो and SSLV it takes around 3 to 4 days to assemble SSLV रे 3 to 4 days it take assemble तो मन तो एटा स्टैटिक वर्ड आजादी सैटेलाइट एमाने लॉन्च करतले 2022 रे फॉर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आजादी सैटेलाइट बुझी पारछो 2025 रे से माने लॉन्च करतले आजादी सैटेलाइट या 500 as a satellite of 500 kg so it's very less amount and it takes around 3 to 4 days आज का डेटा ना we have to put satellite जल्दी भाव जदी जदी PSLV 3 months लागु छी LVM rocket 4 months लागु छी so तमर वेटिंग लिस्ट पळे आसीबो 4 months सेही टाइम रे आउ की नै जिवो स्पेसएक्स नै जिवो या आरएनआर फ्रेंच नै जिवो सेमन नै जिवे सेमन उड़ी देबे माने सैटेलाइट लॉन्च कर देबे सो आज का डेटा रे we are using SSLV and आउ गोटे कथा हला एटा भी तम रखतबे SSLV is a 3 stage solid fuel प्लस वेहिकुलर ट्रिमिंग मॉड्यूल थाय तार माने एडा हले ऑर्बिट इंसर्शन पाइन थाय आ गोटे हला पीएसएलवी हला दिस इज 4 स्टेज रॉकेट एडा भी मन रखिबो आ भीतर कोन थाय सॉलिड लिक्विड हला तापरे जीएसएलवी हला जीएसएलवी जोडा की एलवीएम हला दिस इज 3 स्टेज एडा कोन गोटे तला सॉलिड लिक्विड आउ हला क्रायोजेनिक इंजन ठीक अछि सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन सो एमाने एडा तो मन रखिबोला दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन देखो जेतोला हमें एलबीएम ना दिस इज क्रायोजेनिक ना आ भीतर कोन था लिक्विड ऑक्सीजन एलओएक्स एंड लिक्विड हाइड्रोजन देखो जदि किसी जिंस तुमको इग्नाइट करिवार अछि ना यूनिट फ्यूएल प्लस ऑक्सीजन ठीक अछि फ्यूएल भी दरकार जेतला हमें जेतला बाण जेतला फुटौ छ ना ता भीतर सॉलिड जिंस थाए सॉलिड जिंस से टाइम चिंगारी दउ इट गेट ब्लास्टेड एंड पूरा मैसिव लिफ्ट ऑफ होए ठीक अछि सेमिति 3 स्टेज रॉकेट रे गोटे सॉलिड अछि मु एनालॉजी दउ छी तापर लिक्विड इंजन अछि तापर क्रायोजेनिक इट इज क्रायोजेनिक इंजन केतल काम करे छ आफ्टर द हाइट ऑफ 132 किलोमीटर मतलब जो एलबीएम रॉकेट यूज करे ना द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेज इट ताको लिफ्ट ऑफ टिल 132 किलोमीटर जाय करे दिए मतलब सॉलिड करे जे 25 किलोमीटर जाके माने ऊपर तापरे सॉलिड जेतो सेपरेट हे जो तापर लिक्विड रे मैजिक स्टार्ट हो लिक्विड रे मैजिक के तो 25 किलोमीटर टू 132 किलोमीटर तापरे जाएंगे क्रायोजेनिक इंजन जोटा की liquid oxygen and liquid hydrogen and it is operated at very low temperature -183 degree रे एटा काम करे and एटा 253 degree रे -253 रे काम करे बुझि पाछो आ क्रायोजेनिक इंजन हैला आकु कोन करबो 253 केते 132 किलोमीटर रु 35786 किलोमीटर जाके ये पहुंचेबो बुझि पाछो माने लिफ्ट ऑफ कोड क्रायोजेनिक इंजन विल डू ए लिफ्ट ऑफ टिल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बुझी पारछो एटा तार एक्चुअल कांसेप्ट सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन इट विल माने बुझी पारछो आगे से 25 किलोमीटर जाके सॉलिड कर दबो तापर लिक्विड विल टेक गिव इट्स मैजिक 25 रे 132 किलोमीटर करबो तापर क्रायोजेनिक इंजन तबो ताको 132 रे से कोडिया पहुंचेबो टिल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट रे पहुंचे दबो ठीक अछि ओके लेट मी कम टू द स्लाइड कोड गला हां या एड अछि बहुत किसी क्वेश्चंस आनी है ना दोज हु आर वाचिंग द हाइलाइट्स जानी थे कौन कौन पढ़िबार अछि गोटे मिनट या आई हैड अ लॉट ऑफ न्यूज़ टुडे
ओके यस ओके क्वाड गला हाँ दिस वन ना यस 8 अच्छी दिस वन लेट मी गेट इट ठीक अच्छे मु से स्लाइड टा पाउनी क्वाड गला स्लाइड टा टेक दिस स्लाइड okay I lost the slide somewhere just have a patient पाइजिबे ठीक अच्छे हाँ यस देखो एटी कौन थिला हमरो या एटा ये थिला ठीक अच्छे तो हमरो एटी कौन थिला see this LVM Mark 3 mission launching heavier satellites ISRO LVM rocket successfully launched 4.4 ton communication satellite of CMS-3 making the first time launch has placed a satellite of that weight in geosynchronous transfer orbit एटी कौन लिखा है geosynchronous transfer orbit लिखा है देखो मु तुम कौन होते लिखी 4 ton till geosynchronous orbit माने geosynchronous stationary orbit बुझी पाछ 4 ton till geosynchronous stationary orbit एटी कौन लिखा है successfully launched 4.4 kilogram of communication satellite till geosynchronous transfer orbit एटा तुमको मन रखिया को पड़िबो there is a difference between transfer and synchronous orbit एटा देखो जेतो सैटेलाइट लॉन्च होची ना एटा अर्थ अछि जेतो सैटेलाइट लॉन्च होची ना सैटेलाइट एमिति घुरिबो एक्चुअली देखो सी जस्ट अ स्मॉल कांसेप्ट यू शुड नो सैटेलाइट ता आगे एमिति रिवॉल्व करिवो काहेकि ता पाके एते थ्रस्ट नै जे कि एते फ्यूल नै कि जे कि सी जियो सिंक्रोनस पाखरे पहुंची जिवो बुझी परछो सो दिस इज कॉल्ड एटा सपोज एटा जीटीओ एटा अराउंड केते एच सपोज मु एटा हां अकॉर्डिंग टू देम दिस इज जीटीओ 29910 किलोमीटर मु कहूनी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बाय केते किलोमीटर दका 35786 किलोमीटर ता पर जेतोले एठु एडला जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट ता पर से माने ओटा अपोजिट फायरिंग देबे गोटे अपोजिट फायरिंग देई करी परे से सैटेलाइट टा कोड प्लेस होबो परे से सैटेलाइट टा जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी ऑर्बिटर प्लेस होबो एंड सेतोले से सैटेलाइट टा पूरा घुमिबो बुझी पारछो सेतोले ए सैटेलाइट टा पूरा अर्थ रो चक्कर काटिबो टिल देन इट विल बी प्लेस्ड एट जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तापर अपोजिट फायरिंग देई करी अपोजिट माने बुझो अर्थ पाकर फायरिंग दियाबो देन इट विल प्लेस टुवर्ड्स जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है ना आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट ठीक अछि बुझी पार फ्रॉम जीटीओ टू geosynchronous transfer orbit from transfer orbit to geosynchronous stationary orbit हैला एटा stationary orbit एटा transfer orbit हम कहेंगे आम पाखरे कैपेबिलिटी केते थिला कि बिकॉज़ हमर कैपेबिलिटी थिला केते थिला 4 टन बट द सैटेलाइट वेट वाज 4.4 टन बुझी पाछो दैट इज व्हाई हमें ताको जीटीओ जाके ताको प्लेस करि परथु ओके आई होप यू गॉट माय पॉइंट एबे एक्चुअली कोन होची नाउ आमर जो क्रायोजेनिक इंजिन अछि ना C25 जो C25 अछि आमर जो C25 क्रायोजेनिक इंजिन अछि जोटा के लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन अछि एज ए फ्यूल तार कैपेसिटी ला इट इज अ मशीन कॉल्ड C25 तार कैपेसिटी हला अराउंड 4.4 टन सैटेलाइट पई अराउंड 29909 माने वो एग्जांपल देली बट एबे जो अछि C32 it can exceed around 5 ton भी हे परिबो आगु से इसरो डिटेल लगे परिबो 5 ton माने बुझी पर सैटेलाइट 5 ton को से माने कोड लॉन्च करिवे टिल जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बुझी परछो जियोसिंक्रोनस माने कोडी 35786 किलोमीटर को टाइ जंगे लॉन्च करे पर काहे आर कैपेसिटी बढ़िया को हेले तो हमर क्रायोजेनिक इंजिन रो भी कैपेसिटी बढ़िया को पड़िबो अदरवाइज हे परिबो नाही ठीक अछि दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्रायोजेनिक इंजिन पर बहुत क्वेश्चन पचारन यार यदि तुम आर कांसेप्ट ही जाननो तो देन यू विल लूज 2 मार्क्स क्लियर तबे आउ कोन एलवीएम हैज अ सैटेलाइट लॉन्च रिकॉर्ड हैविंग कैरिड पेलोड्स फॉर चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 जीसैट 19 देखो आउ गोटे कांसेप्ट हला जेतो हमर देखो एडा हमर अर्थ है ठीक अछि एडा हमर अर्थ एडा हमर कोन
एटा हम जियोसिंक्रोनस स्टेशनरी ऑर्बिट एटा एंड एठी जेतो सैटेलाइट कोन प्लेस हे जाए एंड एटा कोन करिवो एटा घुमिबो ओके इट विल सर्कल द अर्थ व्हेन इट विल सर्कल द अर्थ ना यार अर्थ रो सैटेलाइट रिलेटिव मोशन ना इट विल बी 0 बुझी पारछो मतलब अर्थ ए जो सैटेलाइट कांस्टेंट विजिल रखितबो बुझी पारछो कांस्टेंट विजिल रखितबो जेतोले जियोसिंक्रोनस स्टेशनरी ऑर्बिट रे सैटेलाइट को प्लेस करा जाए इट विल हैव अ कांस्टेंट विजिल बुझी पारछो आ गोटे कथा तार एग्जांपल देखि दउछु आई हैव ब्रॉट इट देखो तमे देखि पारछो तमे जेतला वेदर अपडेट मारुछो ना व्हेन यू सी द वेदर अपडेट ना एटा कोन थला इनसैंड 3ds एटा गोटे कोन communication satellite it has been placed at geosynchronous transfer orbit आउट देखिलो constant satellite ता constantly सेट वॉच करिवो देखो कोडी वॉच करूची इंडियन आई मीन सबकॉन्टिनेंट पूरा सबकॉन्टिनेंट को से माने कांस्टेंट वॉच करछंदी एंड तुम जतले से पेज ता खोलिबो ना एठिगारो तुमरा क्लाउड्स देखे दो थर्मल रेडिएशन मैपिंग अछि से सब जिंस देखे दो एग्जैक्टली से अफगानिस्तान को भी देखे पाकिस्तान को भी देखे सो एट दिस इज कॉल्ड communication satellite and communication satellite used for this weather mapping also ठीक अछि एटा कांस्टेंट विजिल करथबो दैट्स व्हाई तुम जे जानिबो एटा एंड आर वेट थिला अराउंड 4 टन पखा भी वेट थिला एंड एटा भी एलवीए मार्क 3 लॉन्च करथला ठीक अछि सो तुम जानि थाओ है ना तो एटा थिला कि हमर जो एलवीएम रो स्पेसिफिकेशन सला ता भी देखो एक तो सॉलिड इंजन यूज होची ता भीतर बूस्टर भी लगी बुझी पार तो लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट के बुझी पार हाउ द आई मीन द लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट केते हेथबो सॉलिड रे बूस्टर भी लगी तापरे कोर स्टेज रे कोन लिक्विड 110 लिक्विड स्टेज इंजन आकु कोन विकास इंजन कोन हैला आकु विकास इंजन कोन तापरे हमरा क्रायोजेनिक स्टेट द मैजिक स्टार्ट हियर लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन ठीक अछि आकु एबे C25 अछि आकु C32 करिवे जदि C32 करे देन हमर पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ी जिवो आकु ओके एडा सो एडा ला कि हमर देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एट कांस्टेंटली सैटेलाइट गोटे जगह को फोकस करथबो ठीक है जोडा पे मु देखै लेबे ठीक अछि एडा ला ये तापरे एडा हमर ये या एडा आउडेला पोलर ऑर्बिट इज फॉर हमर जन कार्टोसैट अछि कार्टोसैट तापरे रिसैट अछि दे विल यूज पोलर सैटेलाइट काहे कि एठी जो पोलर ऑर्बिट अछि ना एडा एमिति घुरिबो पोलर वे रे घुरिबो देखो हमर सैटेलाइट जो अछि ना सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट जाउछि जेतो वेस्ट टू ईस्ट तो सपोज 80 गोटे सैटेलाइट थबो 80 गोटे सैटेलाइट थबो सी कोन करियो फोटो नै जिवो तापर ये जेतो फुणी मूव करिवो तो आर फोटो नै जिवो फुणी मूव करियो आर फोटो नै जिवो माने बुझी परजो पूरा मैपिंग हो डिजास्टर मैनेजमेंट पे एटा बहुत यूज है तमे गोटे जगह को मैपिंग कर दलो बुझी पर एटा लो अर्थ ऑर्बिट रे आ गोटे कथा एटा स्पाई सैटेलाइट पे भी यूज होय स्पाई सैटेलाइट तुम जदि मूवी देखि तबा हमर कोन कहला परमाणु जो जॉन अब्राहम रो जो मूवी आस्तला से माने जेतले कोन करथले से माने जेतो तांको न्यूक्लियर काम करथले तापर से माने कहले सैटेलाइट जदि आसी जिवो देन वी कांट डू द ना से माने ब्लाइंड स्पॉट खोजतले बिकॉज़ लो अर्थ ऑर्बिट रे सैटेलाइट इज वेरी क्लोज एटा केते मैक्सिमम 1000 किलोमीटर हेतबो 1000 किलोमीटर हेतो 1000 किलोमीटर जल्दी देखुछंती बुझे पारछो से माने कांस्टेंट स्पाई सैटेलाइट आबदिन मॉनिटर करे ठीक अछि कांस्टेंट विजिल थाए ठीक अछि एडाला पोलर सैटेलाइट यूज फॉर द लो अर्थ ऑर्बिट तापरे ओके ठीक अछि एडा त हमरा ये दे देली स्पेसिफिकेशंस मु कहि दै छी तापर हमर एडाला एलवीएम3 लॉन्च व्हीकल एडाला लिक्विड स्टेज एडा मझे लिक्विड स्टेज है जेतलो रॉकेट लिफ्ट ऑफ हो ना सब जिंस एका संगे भारी पळेबो ठीक अछि भारी पळेबो दिस इज लिक्विड स्टेज दिस इज सॉलिड स्टेज एंड दिस इज क्रायोजेनिक इंजन एंड जीबी लेट जॉइन करछंती आई हैव एक्सप्लेन द सैटेलाइट फंक्शन वेरी वेल है ना ताकू टिके जानी देखो देखि देबो काहेंगलो एग्जाम रे क्वेश्चंस बहुत पचारंते ठीक अछि ओके तापरे एडा देखि देली ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन है ना काई क्वेश्चन जे मु कहबी ठीक अछि मैच द फॉलोइंग रॉकेट्स with their respective state agencies countries Ariane 5 Falcon 9 SLC Soyuz SLS Soyuz तो मैं अभी बुझी पारछो इट इज वेरी इजी ना दीडा सैटेलाइट बाहर कर दियो देन यू विल गेट इट
आर आंसर कौन है परिवो Ariana 5 का सैटेलाइट आई थिंक Ariana 5 किसका सैटेलाइट है जो तरह हम जीसैट 9 आम लॉन्च करथल Ariana 5 रो Ariana 5 belongs to this one क्या गो यूरोप फ्रेंच सैटेलाइट तापरे Falcon 9 कार Falcon 9 belongs to SpaceX right Soyuz ना Roscosmos ठीक अछि आ SLS हला NASA एडा मिस्टेकन करिबने हमर जो SLS स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हमर थिला SLV हला SLV स्मॉल सैटेलाइट SSLV एडा SLV SLS एडा हला NASA ठीक अछि सो आर सेम आंसर करिवो एमते क्वेश्चन केतल पचार दबोती देन यू शुड नॉट वरी आर आंसर ला बी AQ ना हां AR हां AQ दिस वन आंसर ला बी ठीक अछि ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इफ यू गेट है ठीक अछि गुड मॉर्निंग दोज हैव जॉइंड लेट बट यू आर लेट बट ट्राई टू बी ऑन टाइम ठीक अछि बहुत किछि कांसेप्ट पढ़ाई सो देखि दबो आपको जेतो तमे हाइलाइट्स देखिबो देन यू शुड वॉच इट ठीक अछि which of the following rockets used to launch the Crew Dragon spacecraft which of the following rockets is used to launch Crew Dragon spacecraft एटा जानछो मु आर क्रू ताकू देखि डीपी मिश्रा कहउछंदी मु ताकू देखिनी मु एमते ट्रिक आई डिडंट गेट यू कोन कहउछो ओके भारत भूषण नायक you're also late everybody is late आशा गुड मॉर्निंग है ना मु ताकू देखिनी ट्रिक काली फाल्कन टा यूएसएस सह टिके लिंक करली ओके 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 हां कोड नगर तुम ट्रिक मिली जीवो जदी क्वेश्चन सेटर जदी तुमको टिके जदी एथरो कोन हेतला कि बहुत सारा क्वेश्चंस रे आंसर बी एंड सी रे होतला एबे जो एग्जाम चलतला बहुत सारा क्वेश्चन बी एंड सी रे होतला पीपल वर कंफ्यूज्ड बुझी पाछो हां ए जो क्वेश्चन टा मु काई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट इज यूज्ड टू लॉन्च आई थिंक बी भारत भूषण नायक क्वेश्चन बी राइट दिस इज Falcon 9 यस क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कोन हमर एक्सियोम मिशन यार एक्सियोम मिशन है ना एडा स्पेसक्राफ्ट के जेतला शुभांशु शुक्ला बुझी पाछो से माने कोड जेतले दे वेंट वेयर बुझी पाछो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तांको लॉन्च की करतला Falcon 9 लॉन्च करतला राइट yes विवेक so Crew Dragon spacecraft this is very important है ना तापरे नोटेबल फॉरेन सैटेलाइट कोन अछि हमरा Falcon 9 अछि हमरो कार भाई देख लो Falcon 9 पेलोड कैपेसिटी के 22 मेट्रिक टन टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड 8 मेट्रिक टन टू जियोस्टेशनरी ऑर्बिट हमर केते अछि एलवी हमरो 4 टन अछि बुझी पाछो आ हमरो लो अर्थ ऑर्बिट पे 8 टन अछि जो जीएसएलवी स्पेस लॉन्च सिस्टम जोडा कि नासा डेवलप करछि तांको भाव देख लो 70 मेट्रिक टन नै जिवे एलईओ पय ऑब्वियसली समस्त सेडी जिवे बुझी पाछो तो सोइस केते इट्स वन ऑफ द हेवीएस्ट लॉन्च ऑफ द एंड 17 मेट्रिक टन नहीं परिबे तो आमु कोन अछि आगु को इसरो रो बजट भी बढ़ेबार अछि प्लस आगु इसरो बजट बढ़ेले देन वी कैन हैव दिस गुड लॉन्चिंग जदि बजट न बढ़ेबो ना इसरो रो आई मीन जदि तुम बजट न बढ़ेबो हमें सही 4 टन टिल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट and 8 ton till low earth orbit एमन सब देखो एमन सब कोन Falcon 9 इज प्राइवेट एलन मस्क से 8 टन पळुछ जियो स्टेशन जके 8 टन पळुछ आमे केते जाउ 4 टन जाउछ सो बुझी पारछो वी नीड हमको और बजट दरकार ठीक अछि एंड रिसर्च पे आउट कथा हला कि सिक्योरिटी इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द स्पेस साइंटिस्ट हम जो रिसेंटली डीआरडी रो साइंटिस्ट मरि जेतले बट रिसेंट रिपोर्ट आसला 1300 साइंटिस्ट हैव बीन किल्ड बाय the agencies and semana kono heart attack ro morchon and normally heart attack ase it's a plan called assassination murder eta ke kore either CIA korto no ISI korto so we need to take care of our scientist no ame pochu chalthaba jodi homi baba jeto se jodi tangar आकस्मिक मृत्यु हो जेतला ना जदि से जदि ठीक टाइम जदि थांते ना आमे आज जगह बहुत जगह ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेज ऑलरेडी पार कर संत ना आमे थोरियम रे में कोन करछु वी यूज थोरियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी राइट आमे से स्टेज को जाइनु जदि
भावा था तो वी कुड हैव बीन आत्मनिर्भर भारत बाय नाउ कहीं थोरियम रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होची थोरियम रू जो U235 यूरेनियम कन्वर्सन होची आम करि पारुनु बुझी पारछ सो हमर बैड लक हमर एजेंसी किछि गद्दार थिले जो हम साइंटिस्ट को भी मार देले तो इट्स नॉट गुड ना है ना आज का डेट रे कोन आमे आर्यना 5 यूज करछु कहा पई इनसेंट 3D एंड जीसेट 30 लॉन्च करिया पई एंड आमे केते पैसा दउछु तांकर गोटे लॉन्चिंग ता 300 कोटी टका 300 करोड्स गोटे लॉन्चिंग इंडिया रो वापस बाहर को जाउछु पैसा दउछि दुर्भाग्य ना बुझी परछ एटा करो ए दिस क्वेश्चन यूपीएससी 2018 हैला PSLV launched satellites used for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed to launch communication satellites. ठीक अछि तापरे satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position. PSLV permanently fixed in the same position in the sky as viewed from particular location on Earth. Okay. GSLV Mark III, जोड़ा कि LVM Mark III is a 4-stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket and the second and fourth stage using liquid rocket. Which of the following statements is or are correct? तो मैं अभी पढ़ी तो try to answer this question, right? एटा कौन होगा? PSLV launch satellite used for the Earth resource monitoring where GSLV are designed. मु कोनी Earth resource में जो रिसैट कार्टोसैट एडा PSLV माने कोन अर्थ रो मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट हबो से फोटो खिचिबो बुझि पाछ जते मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट हबो 80 तार से फिक्स थाए नहीं फिक्स न थाए हां पोलर ऑर्बिट रे थाए सी तार फोटो खिचिबो ये फुणी गला फुणी आर फोटो खिचिबो सी जतला वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होची सी तार समस्त फोटो खिचिबो बुझि पाछ तो एठी कोन थिला PSLV launch satellite used for Earth resource monitoring जो reset कार्टोसैट ठीक अछि बुझि परछ and GSLV are designed to launch communication heavy satellite ठीक है this one is correct ठीक अछि तापरे satellite launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position permanently fixed एडा से कहूची PSLV एडा एक्चुअली GSLV रो GSLV permanently fixed is GSLV जोटा कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रे थाए permanently fixed है ना as viewed from a particular location on earth तापरे Mark III LV Mark III 4-stage launch vehicle with first and third stage solid कोन गोजी first and third हला solid second and fourth हला liquid एडा हला PSLV रो एडा definition for PSLV बुझी परछ तार आंसर कोन हबो आंसर ला one only this is a UPSC question हला this is a UPSC question 2018 रे and trust me ये जदी इमता क्वेश्चन जदी OPSC रे पडिबो ना एंड ता पूर्व तमे बहुत सारा टफ क्वेश्चन अटेंड कर देले ना ए क्वेश्चन भी करि परिबोनी सेति पय तुमको फंडा हैज टू बी क्लियर बिफोर अपेयरिंग OCS एग्जाम ना इट्स सेति मु को इट्स नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी OCS एग्जाम अटेंड करिया बहुत कष्ट ना एबे त लेवल 2022 पर त लेवल बढ़े छी एंड आई होप तमे भी तुम निजे लेवल बढ़ा देखो ठीक ठाक पढ़ले हबनी निजो औकात बाहर बढ़िया पड़िबो बुझी परछ ठीक ठाक पढ़ले कोन मैक्सिमम प्रीलिम्स क्लियर करिवो मैक्सिमम प्रीलिम्स क्लियर करिया पे बहुत बड़ सपना आज का डेट रे बुझी परछ तो यूज योर ब्रेन जहां अछि अभी यंग अछो है ना अबे एनर्जी बहुत अछि स्टार्ट रीडिंग माने हेवीली पढ़ो है ना जोड तुमको नॉलेज मिलछि पढ़ो एंड वी आर हैविंग अ गुड टीम ठीक अछि एंड पर्सनली हमें तुम देखिबो केम कम करि परिबो ठीक अछि आई होप यू लाइक दिस ठीक अछि now I will come to the Chabar fort ठीक है boost for India's Afghanistan plan Trump admin extend waiver on Chabar port sanctions why US move is important देखो October 30 रे न्यूज़ थिला है ना ता पूर्व कोन हितला September 30 रे कोन हितला जाओ Trump admin Chabar port को सैंक्शन पके देतला आ मासे तोरा आंगो सैंक्शन पके देतला Chabar port को बुझी पाछो किंतु एबे कोन कला October 30 रे sanctions को काढी देला काई कर देला I mean India should reduce buying oil from Russia आउट था देखो India has been very good on that front Trump repeats claim on Delhi reducing energy purchases from Moscow देखो my specifications कोन आंचो it's all about business
ठीक अच्छे मु तार क्लिप काढ़िया बोली 2018 रे जो जर्मनी रशिया टू ऑयल परचेस करने ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो सी पैसा दौले या फंडिंग करुले से ट्रंप 1.0 थिला एडमिनिस्ट्रेशन रे सी फटकार लगे नाटो एंड जर्मनी को तमें कहीं ट्रंप तमें कहीं रशिया रो तेल किणुच ठीक अच्छे अरे भाई अरे ये जर्मनी अच्छी ये रशिया अच्छी अरे भाई से नेचुरल गैस तेल से एठू ही किणव ना तमें यूएसए एड अच्छा यूएस अच्छा एंड इट इज वेरी माने लॉजिकली इट इज वेरी फार तमें जोड़ी सस्ता मिले मुझे किणी बट से 2018 रो न्यूज थिला बुझी पार 2018 रे ट्रंप वाज सेइंग दिस एंड 2018 रे देयर वाज नो रशिया यूक्रेन वॉर केबे छला 2022 केबे फेब्रुअरी 24 It's all about oil purchase. एमिति ना कि my heart goes माने please stop dying, please stop dying, please stop killing. एटा सब फर्जी बकवास चूरन किछि नो एटा. It's all about oil. Without oil रे ताको oil business दरकार ताको सी गोटे तांकर पोल कैंपेनिंग अछि. Drill baby drill. सुनी थबो drill baby drill. बुझि पारछो. And he doesn't care about our pollution किसी जमा care. Trump doesn't care about pollution. से थ्रेटन करे मु रिन्यूएबल एनर्जी रु मु काढी पळेबी आई विल मु रिन्यूएबल एनर्जी रे रहबिनी बुझी पारछ सेते पय से ऑयल को बहुत एक्सट्रैक्शन करूची से एंड तांकर जो यूएस रे जो एनर्जी सेक्रेटरी अछि या एनर्जी मिनिस्टर अछि दे आर गोइंग टू विजिट इंडिया इन द नेक्स्ट वीक फेब्रुअरी नवंबर सेकंड वीक तापर से माने एंड चाइना को भी से माने विजिट करिवे एनर्जी सेक्रेटरी जो अछि ठीक अछि सो दिस इज है एटी कौन लगा इंडिया गेट 6 months यूएस सैंक्शन वेवर फॉर छावर पोर्ट ठीक है इंडिया रिसीव्ड 6 months वेवर फॉर यूएस सैंक्शंस छावर पोर्ट अलाउइंग कंटिन्यू सप्लाईज टू अफगानिस्तान सो एबे कौन अछि अफगानिस्तान को स्टेबल करियार अछि यार है ना तमे देखो देखो एटी देखो दिस इज ईरान राइट एटू हमर कांडला पोर्ट जीवो एटी एडाला छावर पोर्ट राइट एटू कॉल एडा आर डिस्टेंस हो जाए 170 किलोमीटर ठीक अछि दिस इज एडाला कोन छावर पोर्ट तमें ईरान ओके ईरान ऊपर तुम सैंक्शन जदि तुम ईरान ऊपर सैंक्शन कर देबो देन वेयर विल अफगानिस्तान गो तर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भीतर भलो संपर्क नहीं तो जदि तुम ईरान को सैंक्शन करिवो देन अफगानिस्तान विल डाउनग्रेड तांको सेट ह्यूमैनिटी इश्यूज आस जीवो आज का डेट रे जा भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करे इंडिया से छावर पोर्ट थ्रू करे सेते में ट्रम्प चाहूची कि नहीं ठीक अछि हमको दे देबा प्लस तमे रशिया रो तेल किणिया कम कर दियो आउट कथा इट्स अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया गुड इट्स या लेट मी सी दिस ठीक अछि एटा देखो व्हाई हाउ छाबर कनेक्ट्स अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया गोटेला मैरीटाइम लिंक है ना कार्गो ट्रैवल्स फ्रॉम इंडियन पोर्ट्स टू मुंबई टू काडला टू छाबर पोर्ट देखो ए जो एटा छाबर टू जहेदन ना एटा हला पूरा रेल लिंक अछि एटा इंडिया बहुत हेवीली इन्वेस्ट करछ $1 billion एट खर्च करछ एटा रेलवे पोर्ट एंड एडा भी बनेबो इंडिया बनेबो आगु को सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बुझी पड़न तापरे एटा कोन थिला इरानियन लैंड रूट फ्रॉम छाबर टू जहादेन कनेक्टेड बाय ऑनगोइंग रेलवे एंड हाईवे एंड इंडिया ईरान कोऑपरेशन एक्चुअली कोन थिला जेतो ईरान थिला जेसीपीओ थिला ना जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान रो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी अछि जोटा कि से माने एनरिचमेंट करि परिबेनी यदि तुम बेसी एनरिच माने ईरान कोन कहूची मोर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी अछि आई विल डू एनरिचमेंट हाई एनरिचमेंट काहे कि एनरिचमेंट कले मैं बम बनै परिबे एंड यूएसए चाहुनी यूएसए एंड इजराइल चाहुनी सेते पय ईरान ऊपर बहुत सैंक्शन लागि छै 2018 सैंक्शन लागितला बुझी परछ तापर अफगान कॉरिडोर फ्रॉम जैदन टू जरांच ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर दे थ्रू द डेलराम हाईवे built by India in 2000 linking to Afghan and it is a very old project ना further ऐसे डेलराम कार्गो move towards काबुल खंदार माने एटा obviously अफगानिस्तान को कनेक्ट करे पड़छला माने आर सिग्निफिकेंस कोन इट प्रोवाइड्स पाकिस्तान फ्री माने पाकिस्तान को बाईपास करी हम जीवो फैटलेट्स ट्रेड ह्यूमैनिटेरियन एंड ऑल दैट गुडविल विल अर्न बाय एक्सपोर्टिंग दिस रिसोर्सेस ठीक अछि एटा लइए एटा देखि दबा मु कहिन करछि फॉर इंडिया इट एंश्योर्स अ लॉन्ग टर्म रीजनल स्ट्रेटजी स्पेशली इन पोस्ट तालिबान है ना एक्चुअली कौन जितना हमें तालिबान आसते ना हमको फियर था कि तालिबान में अफगान तालिबान में टर्न हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया बट एटा हेला नहीं 2020 जितला अफगानिस्तान तालिबान आसला नाउ इंडिया इज
बिल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीमेंटल ब्यूरोक्रेसी चलची एबे धीरे धीरे वी आर आमे एबे कोन तांको सेट हम खोलिलु हमर जो एम्बासी अछि सेट खोलिलु एबे धीरे धीरे देन धीरे धीरे वी बिल्डिंग ट्रस्ट एंड हमें तो गुडविल गेस्ट तो पठौचे बे ना फॉर यूएस वेवर रिफ्लेक्ट स्ट्रेटेजिक अकोमोडेशन ऑफ इंडिया's इंटरेस्ट amid a tough Iranian sanctions Washington sees Chabar as a counterweight to China's Belt and Road Initiative ठीक अछि देखो यूएस रा एटा दोगला नीति थाए टू काउंटर चाइना दे विल यूज इंडिया एंड टू काउंटर इंडिया दे विल यूज पाकिस्तान सिंपल एज जोटी पैसा थबो सेट मिलिबो एंड जोटी निज स्वार्थ थबो से माने सेमति यूज करिवे चाइना रो बीआरआई को काउंटर करिया पे से माने सैंक्शन रो मुक्ति कर देले चाबर पोर्ट नाउ यू कैन यूज चाबर पोर्ट and for Iran provides economic activity despite US sanctions enhances Chabar port profile intermediate trade hub and western sanctions ठीक अछि एगो western sanctions को bypass करछि सिंपल एंड मेन हला कि सेंट्रल एशिया एक्सेस दरकार ठीक अछि एबे रिसेंट न्यूज़ कोनतला व्हाई तालिबान मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया's ग्राउंड ब्रेकिंग माने एटा थिला कि रिसेंटली एट अ हाई लेवल है ना एटा तो हमर सेक्रेटरी अछि फॉरेन सेक्रेटरी अछि पते राइट and they have a meeting आगु कौन करि परिबो ठीक अछि दिस वन है ना and एटा वेवर कौन देछि वेवर इज वैलिड फॉर 6 मंथ माने नवंबर अक्टोबर देछि ना टिल अप्रैल एटा वेवर रही परिबो से माने इंडिया रो ऑब्जर्व करिवे इंडिया मस्ट एंश्योर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विथ बोथ वाशिंगटन एंड तेहरान टू सिक्योर फर्दर माने वेवर अछि 6 मंथ पे देखो एबे कोन करिया पड़िबो एबे हमको लॉबी करिया पड़िबो ठीक अछि लॉबी माने लॉबी माने बुझी पार लॉबी इन यूएसए मतलब तुम पैसा देके करियो ट्रम्प जो संगोडा अछंती तांकर जो खास लोक होछंती से खास लोक को इंडिया को धरिया पड़िबो आकु इंडिया को कोन करप्शन कोनती यूएसए को लॉबिंग कोनती पैसा दियो से माने ट्रम्प को कथा पहुंचेबे तम कथा से ट्रम्प को पहुंचेबे volatile regional environment security risks persist and all the Iran's internal politics and USA Iran tension could create uncertainty for Indian projects सेति पे uncertainty रहउची जदी 6 months ପରେ पुणी छाबर पोर्ट ऊपर सैंक्शन पके देबो then what will happen पुणी पैसा रहबो ना हम जो शाही बेस्ती टर्मिनल जोडा में यूज करछु then सेटा डिफंक्ट हे जबो डिसफंक्शनल हे जबो बुझी परछ तापर कोन हबो ऑपरेशन होला जदी पुणी सैंक्शन पड़ जो then बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जबो लॉजिस्टिक्स रो कॉस्ट बढ़ जबो ए सब जिंस होची Hela. Bottom line कोन the Trump administration decision to extend the Chabar port sanctions waiver is a significant and diplomatic and strategic victory for India. It's for 6 months. बुझी परछ हम जानू तापर से कोन करबो I mean हमर आर्मी चीफ भी कहउछन यार we don't know what Trump will do in the next month. The next day कोन कहबो से भी जाननी however the relief is temporary in condition एटा अछि ठीक अछि so एटा आउट क्वेश्चन अछि मने छी India is one of the founding members of the international north south transport corridor, a multi-modal transport corridor which will connect India to Central Asia to Europe via Iran, India to Central Asia via China, India to Southeast Asia through Bangladesh, and India to Europe through Azerbaijan. INSTC corridor में कथा होइछ. Our answer कौन हो? India is one of the founding members of the INSTC corridor. I think India to Central Asia ना via Europe. देखो, आउट क्वेश्चन है. Considers a statement, India wants Chabar port to be included in the 13 national international INSTC corridor, Chabar port, that extends from India to Russia. Which of the following countries are the members of INSTC? Which of the following countries are members of INSTC? It 1, 3 and 4th option is 1, 3 and 4. I don't think Mongolia is not a China तो नो है ना you can delete this is Iran ठीक अछि मु देखि दो INSTC corridor देखि दो ओके this is INSTC corridor एठू चाबर पोर्ट भी जाय एठू देखो एठू जीव बंदराबास पोर्ट इज इन ईरान ठीक अछि एठू तमे अस्त्रखान जाय परिबो तापर मॉस्को जीवो तमे एठू तेहरान रु तमे जीवो कोड यूरोप जीवो ठीक अछि सो दिस इज INSTC corridor एमि जीवो तापर एमिति बोली के आस परिबो ठीक अछि आगोटे ला कि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर आ भीतर कोन कोन कंट्री अछि यू शुड नो हैला कोन कोन कंट्री अछि गोटे ला इंडिया अछि तापरे यूएई अछि गोटे सऊदी अछि जॉर्डन अछि इजराइल अछि इटली अछि फ्रांस अछि जर्मनी अछि प्लीज रिमेंबर दिस है ना प्लीज रिमेंबर दिस कि अछि इंडिया यूएई सऊदी जॉर्डन इजराइल इटली फ्रांस जर्मनी आई एम कॉरिडोर केबे डेवलप हेतला 2023 जी
G20 सबमिटेड डेवलप हेतला एबे कोन हैला आफ्टर जो वॉर एड चलला एडा बे ठंडा बक्सर पड़ जाई जेतो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी कीन टू डेवलप दिस आईएमए कॉरिडोर एबे कोन होची सपोज एबे ट्रम्प जो 20 पीस प्लान होची सेडा जदी ठीक हेई गले देन दैट इज गुड ए प्रोजेक्ट फोन आगु स्टार्ट हबो बुझी पारछो बट यू शुड नो आईएमए कॉरिडोर का को मिडिल ईस्ट रे इट कनेक्ट्स जॉर्डन इजराइल ठीक अछि मिडिल ईस्ट रे इट कनेक्ट जॉर्डन एंड इजराइल एठी का को बाईपास करछ टर्की को बाईपास करछ ठीक अछि टर्की को इट विल बाईपास टर्की सो इंडिया यूएई सऊदी जॉर्डन इजराइल इटली फ्रांस जर्मनी पचार दबो आईएमए कॉरिडोर रे को कंट्रीज नाहंती सेमता क्वेश्चन भी पचारि पारे बुझी पारछ तापर ओके तापर आगुडे लागे डिफेक्शन रोस एटा कालीरो न्यूज़ थिला स्पीकर begins hearing case against 2 more BRS MLAs है ना डिफेक्शन रोस थिला आई मीन एंटी डिफेक्शन लॉ चलचे बे न्यूज़ रो अछि एंटी डिफेक्शन लॉ इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ OCS माने सिविल सर्विस एग्जामिनर्स OPSC पे एंटी डिफेक्शन लॉ इज वेरी इंपोर्टेंट है ना देखो एंटी डिफेक्शन लॉ ए गोटे MLA MP can be disqualified by how much ways गोटे इंसॉल्वेंसी अच्छी अनसाउंड माइंड भी अच्छी आउ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अच्छी गोटे एमएलए एमपी कैन बी डिस्क्वालिफाइड बाय सच वेज आ गोटे है एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक अच्छे दिस इज द वे वन कैन बी मतलब कैन बी स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ एमएलए और एमपी है ना आमर हाँ माने जो पार्लियामेंट पे एमपी पे कौन आर्टिकल अच्छे 102 क्लॉज 2 ओरिजिनली जो हमर 52nd अमेंडमेंट आस्तला एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड हेतला आयरम गायरम जोतिले गोटे दिन रे गोटे फोर्टनाइट रे तीनटा पार्टी चेंज कर देतिले काहे से मिनिस्टरशिप बर्थ पाया पे ठीक अछि सेठी जो एंटी डिफेक्शन लॉ आसनतला 52nd अमेंडमेंट पूर्वरु ओनली आर्टिकल 102 क्लॉज 1 ग्राउंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंसॉल्वेंसी एंड सिटीजनशिप यदि तुम नथो देन यू कैन बी लायबल फॉर द माने कोन रिमूवल बट 52nd अमेंडमेंट रे 10th शेड्यूल आला MPs कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर डिफेक्शन 10th शेड्यूल हैला 102 रे 10th शेड्यूल भी ऐड हिच तापरे स्टेट लेजिस्लेटिव में 199 कोन थिला सिमिलर ग्राउंड्स थिला 80 भी 10th शेड्यूल को ऐड कर देछन माने 191 रे 10th शेड्यूल क्लॉजेस ऐड हिची सो दैट ये आ गोटे कथा कहूची मोर गोटे क्वेश्चन अछि कैन राज्यसभा MP can be disqualified by anti-defection law? Can Rajya Sabha MP can be disqualified by anti-defection law? देखो anti-defection law जितना आसला तार मेन उद्देश्य कौन था स्टेबिलिटी माने गवर्नमेंट रो स्टेबिलिटी पाई एंटी-डिफेक्शन लॉ आसला केबे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पाई हला एंड हाँ क्वेश्चन पचारि पारिबे क्वेश्चन एमिति स्टेटमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ इज यूज्ड अगेंस्ट राज्यसभा एंड लोकसभा एमपीस तमे जानी थबो माइट बी तुम कंफ्यूजन भी क्रिएट करि पारिबो क्वेश्चन दे दो एंड एडीएल यूज्ड फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एमिति क्वेश्चन दे दो एक तो तुम देखियो इट्स बोथ भी देछि लोकसभा भी देछि राज्यसभा भी देछि है ना इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन तमे यू नो तमे कांसेप्ट जानि छ स्टिल इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन एक्चुअली लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ एंटी डिफेक्शन लॉ यूज जेमति हमरो शरद यादव हेतला 2018 रे तांको डिस्क्वालिफाई कर देथिले काहे जेते सेतले जेडीयू आरजेडी टू भांगी देला एंड जेडीयू जॉइंड बीजेपी एंड शरद यादव जो जेडीयू रो स्पोक्स पर्सन थिला ही वाज अगेंस्ट द पार्टी बुझि पाछो एंड आगुडे हला कि ठीक अछि देखि दोछ देखो ग्राउंड्स फॉर द 10th शेड्यूल डिफेक्शन कोन अछि गोटेला माने इट गॉट मैंडेट फ्रॉम द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से एडेड 10th शेड्यूल टू 102 एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखते भला 102 and 199 it is very important मन रखे पड़िबो applies to parliament MPs माने राज्यसभा एंड लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स द ग्राउंड्स फॉर डिस्क्लोजर voluntary giving up membership of party है ना voluntary giving कले you will be eligible for
disqualification. Audila can be inferred from allegation, statements or conduct even without formal resignation. देखो तुम जब allegiance switch करछो ना एटा सब कोन वेग टर्म बडा वेग टर्म allegiance हे गला तापरे वॉलंट तापरे कोन अछि तमर conduct हैला these are decided by speaker बुझी पारछो तमे तमे देखिलो मु बीजेपी एमपी मु कांग्रेस सभा रे मु पळै कि तांकर स्पीच सुनुची देन आम पार्टी वाला कहबे आकु डिस्क्वालिफाई कर दियो कर देबे स्पीकर चाहिले कर देबो देन आई विल गो टू द जुडिशियरी एंड बहुत वल्नरेबल थाई सब जिंस है ना पब्लिक एग्जांपल कोन पब्लिक सपोर्ट टू अनदर पार्टी एटा डिफेक्शन वोटिंग एब्सटेन पार्टी व्हिप को तुम पार्टी व्हिप कहू तुमको वोट करा पड़िबो देन बट यू आर नॉट माने तुम वोट करलोनी या तुम प्रेजेंट नथले देन यू आर एलिजिबल फॉर डिफेक्शन बट हां तुमको 15 डेज और टाइम भी दिया जाए तुम कहीं वोट करन तापरे पारा 2(1)(b) ऑफ 10 शेड्यूल कोन डिफेक्शन इफ मेंबर वोट्स और अब्सटेन्स अगेंस्ट ऑफिशियल डायरेक्शंस इन लेजिस्लेचर तापरे ओडा मर्जर थाए 2/3 मर्जर थाए देखो 2/3 देखो जेतलो 50 सेकंड आस्तला ना पी आस्तला ना सेतलो से स्प्लिट करथले 1/3 स्प्लिट को से माने कहथले इट कैन लीड टू डिफेक्शन है ना माने किछि एक्शन नि होबनी सपोज पार्टी रे 30 मेंबर्स अछंदे 1/3 केते होछि 10 मेंबर्स जदि अलगा पार्टी को पळेले आकु स्प्लिट कोंती ठीक अछि देन से 10 मेंबर्स तांको ऊपर किसी एक्शन निया जीवनी से बैंडविड्थ थिला 1/3 थिला तापरे 91st अमेंडमेंट रे कोन हला 2003 जतला आसला आकु आउर स्ट्रिंजेंट बने देले कोन एबे आकु 2/3 बने देले हला 2/3 सपोज 2/3 गोटे पार्टी रे 30 टा मेंबर अछंदे हला 2/3 ऑफ के थिला 20 मेंबर्स गले जाएंगे डिफेक्शन होबो बुझी पाट 20 मेंबर्स गले आ जदि 19 मेंबर्स जायतबो देन ऑल दोस 19 मेंबर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड जदि 20 मेंबर्स जिवो देन देयर विल बी डिफेक्शन जदि शिवसेना रा ऑलमोस्ट 90% लोग पळैथिले ठीक अछि दिस इज द कैच 1/3 एंड 2/3 आकु कोंती मर्जर आकु स्प्लिट कोंती नि मर्जर कोंती स्प्लिट थिला 52nd अमेंडमेंट रे ठीक अछि होप यू गेटिंग माय पॉइंट ठीक अछि एटा स्प्लिट थिंग इज बीन रिमूव्ड बाय 91st माने 91st रे कोन कहले 2/3 हैला ए जिनसडा से कहउछन तापरे की केसेस इज वेरी इंपोर्टेंट काई बिना केसेस रे तुम जानि परिबोनी कि कोन होउछ आको देखो की हो तो हलहलन केस 1999 फर्स्ट टाइम जुडिशियल रिव्यू वाज रिकॉग्नाइज्ड है ना एटा थला आगुर कोन थला स्पीकर इज द सुप्रीम कोर्ट स्पीकर इज द हाई कोर्ट एंड एवरीथिंग किंतु की हो तो हलहलन केस एटा मन रखिबो फर्स्ट टाइम जुडिशियल रिव्यू आसीबो स्पीकर्स डिसीजंस आर प्रोन टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एटा थला तापरे एटा थला कि मेघचंद्र सिंह स्पीकर voting against whip is also called defection एटा भी थिला मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर 2006 रे थिला और ना शरद यादव केस जोटा म कोथली allegiance counts as voluntary living एटा भी थिला माने मु जेडीयू लोको मु आरजेडी सभा रे बसची देन आई एम स्विचिंग माय allegiance मु जेडीयू रे थिली मु आरजेडी रे जाई बसची या मु बीजेडी रे थिली बीजेडी रे मु बीजेडी रे मु सिलेक्ट है कि मु लोकसभा रे जाईतली किंतु मु देखु मु बीजेपी रे बसची कोन मु allegiance स्विच कर देली दिस इज कैन बी काउंटेड एज तुम का कोइनो बट स्पीकर चाहिले आको वॉलंटरी लिविंग भी कर दबो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशनरी ऑफ द स्पीकर एटा बेम थियो शरद यादव केस रेतला है ना ए क्वेश्चन टा करो व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू अंडर द एडीएल इज और आर करेक्ट कौन दीजिए द डिसीजन ऑफ द स्पीकर चेयरमैन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट बिफोर इट इज मेड decision of the speaker or chairman disqualify cannot be challenged in court before it's made tapare judicial review was the first explicitly recognized in Meghchandra Singh 2020 case first explicitly recognized tapare a member's disqualification for defection can only be challenged in Supreme Court not in high courts एडा भी देखो एडा कौन होगा आंसर which of the following is or are correct देज DP Mishra कौन कहते हैं गोटे क्वेश्चन when there was a VP election in this year he got vote from opposition party also can speaker uses ADL please reply नहीं VP election रे तुमको exemption दिया जाए
वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे से एक्चुअली कोन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ना से व्हिप जारी करा जायनी सेठी जो बैलेट बॉक्सिंग था ना बैलेट तीनटा बुझेला मु देखुची जेतले बैलेट बॉक्सिंग था ना सेठी व्हिप जारी करा जायनी बैलेट बॉक्सिंग जणा नहीं किए कोन किए काकू दिया जाउची सेठिका रूल अछि बैलेट बॉक्सिंग रे जे जाको वोट दबो ना सेटा जणा पड़िबो नाही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे बुझी पारछो बट हां तमे जदी राज्यसभा रे बसिचो जदी तमे राज्यसभा रे बसिचो लोकसभा रो किछि बिल आसिला किछि बिल लोकसभा रो आसिला राज्यसभा रे तुमको व्हिप जारी करा गला कि तुमको से बिल को सपोर्ट करिवार अछि बट तुम सपोर्ट करलोनी देन व्हाट विल हैपन तुम प्रॉब्लम किंतु वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लागिबो कि वाइस प्रेसिडेंट तुम इलेक्शन दोछ ना जेतल तुम वोट दोछ ना इट इज वेरी मच सिक्योर्ड के जानि परिबेनी बुझी पारछो सो इट इज बीन एग्जेम्प्टेड कौन देछि ए मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन कैन ओनली बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली इन हाई कोर्ट तीनटा बुझिलानी थर्डटा बुझिलानी एटा तो देखो लेट मी सी regarding decision of the speaker chairman on disqualification cannot be challenged in court before its mandate obviously जेतल स्पीकर तार डिसीजन देइथबो जेतल ता स्पीकर डिसीजन देइथबो then only it will be challenged right when speaker will be taking the decision तापर चैलेंज हे पर अरे स्पीकर डिसीजन देइन तमे चैलेंज केमिति करबो right the decision of the speaker on disqualification cannot be challenged obviously it cannot be challenged ठीक हो छेटा Judicial review was the first explicitly recognized in the Keshav Chandra Magchandra Singh 2020 case. Two ठीक अच्छी की कौन थिला केस थिला Judicial review was mentioned को थे कि हो तो हॉलो हॉलन केस 1992 right मन रखियो so this is wrong 2 is wrong a member's disqualification for defection can only be challenged in Supreme Court not in High Court कौन अच्छे अरे भाई तुम जब एमपी वाला जीव ना एमपी वाला मैक्सिमम केस जाए सुप्रीम कोर्ट को जाए और एमएलए वाला केस जाए हाई कोर्ट को जाए ठीक अच्छे सो दिस इज आल्सो रॉन्ग तार आंसर कौन अच्छे वन ओनली हम आंसर ऑप्शन कौन देछि ऑप्शन रे किछि नाही ताले कौन दो ओपीएससी कौन करिवो ग्रेस मार्क तुम दबो ग्रेस मार्क दबो सी एबे देखलो तुम जानिचो आंसर जानिचो ओपीएससी कौन करूछि तुम क्वेश्चन जानिचो तुम आंसर जानिचो ठीक अच्छे यू नो एवरीथिंग आंसर जानिचो बट गोटे क्वालिफाइड स्टूडेंट पाई इट वाज अ मार्क माने तापे एटा मार्क थिला बुझी पारछो एबे ओपीएससी ता प्रोरेटेड करिकरी से कोन कहे नाइ मो समस्त मार्क दे देबे आ भीतर घाटा कार हला आ भीतर घाटा कार हला बुझी पारछो ओपीएससी रे प्रॉब्लम हला एटा तमे क्वेश्चन जदी ठीक तबो ऑप्शन भूल तबो या क्वेश्चन भूल तबो ऑप्शन ठीक तबो देन कोन हबो आरे आंसर हला वन ओनली गोटे भलो स्टूडेंट से पढ़िथबो से वन ओनली खोजी से पाइबोनी से लास्ट को 1 and 2 मारिबो देन से क्वेश्चन डिस्प्यूट हेजबो लास्ट को कोन हबो समस्त ग्रेस पाइले आ कोन देन प्रॉब्लम एठी होउची से डिजर्विंग पिलाटा से पाइबोनी तो बुझी पाछ मु कोन कहूची से डिजर्विंग पिला से पाइबोनी से मार्क ही पाइबोनी कोन करिवो से एंड जदि सी तार भाग्य जदि खराब था सी 1.2 मार्क्स से कटथबो या 0.5 मार्क्स से कटिथबो ए 2 मार्क पारथिले तो कट ऑफ भी पार कर देथांदा सो एटा सब भाग्यर खेल था माने एट सम टाइम तुम भगवान को प्रे करो है ना सकाळ उठी तुम प्रे करो भाई मते लक भी दियो है ना हार्ड वर्क नेवर ए सब एग्जाम रे हार्ड वर्क तो चले बट लक भी दरकार पड़े एटा प्राइम एग्जांपल ए क्वेश्चन सेति पे एमते क्वेश्चन मानथली तुम जानिया कथा कि ओपीएससी केम कर सेति पे मु कहूची ऑल राउंड प्रिपेयर करके जाओ एमिति स्कोर करो जेतोला प्रीलिम्स और जीवन तुम स्कोर करतो ना मु 120 स्कोर करछि बुझी पारा मैक्सिमम क्वेश्चन विवेक को मैक्सिमम क्वेश्चन इन ओसीएस कम लाइक दिस लाइक ग्रेस मार्क भाई ग्रेस मार्क मिल जीवो ना मैक्सिमम एटलीस्ट तुम 10टा क्वेश्चन जदी आसिले एथर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन थिला अरे 7 to 8 क्वेश्चन गोटे कैंडिडेट को बाहर कर दबो भाबले 7 to 8 को से जानि तबो बट से क्वेश्चन डिस्प्यूट हे जीवो देन दिस विल बी बिग प्रॉब्लम बुझी पारछो so I hope they change their style माने एटा बहुत बड़ा प्रॉब्लम एटा बुझी पारछो एटा इनकरेक्ट है ना तापरे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडीएल राइट सो प्रे करो जेतो तुम एग्जाम भी दबो तुम पाखरे से लक भी थबो सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल ना एटा कोन थिला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडीएल द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट in 1984 it is placed under the 10th schedule of the constitution okay
The anti-defection law was further strengthened by the 93rd Amendment in 2003. Okay, the law mandates the chairman or the speaker of the respective house to decide on disqualification out of defection. Eta kono answer kono? What can be the answer? The anti-defection law was enacted during the Indira Gandhi government. Indira Gandhi government anitile na Rajiv Gandhi anitile. से एग्जाम रे प्रॉब्लम एमती हो यार राजीव गांधी लाया था या इंदिरा गांधी लाया था एमती के कंफ्यूजन है जो राइट इट इज प्लेस्ड ऑन द 10th शेड्यूल दिस इज राइट कैन यू टेल मी 9th शेड्यूल कौन थिला 10th शेड्यूल कौन थिला 9th शेड्यूल के बेस थिला कैन यू टेल मी अब व्हेन वाज 9th शेड्यूल आस्तला के बेस थिला 9th शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन जानिया पड़िबो 9th शेड्यूल था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे तमे जदि गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखछ ना गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी ना तारा फर्स्ट 2 मिनिट्स देखिबो फर्स्ट 2 to 3 मिनिट्स देखिबो सेटा थिला ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऊपर थिला मु केबे कहबी जतो डिस्कस करबी मु केबे तुम कहबी कोन कोन अछि 10th शेड्यूल थिला इट इज प्लेस्ड अंडर 10 दिस इज राइट द ADL वाज फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय 93rd अमेंडमेंट 93rd अमेंडमेंट इज इट 93rd अमेंडमेंट या 92nd अमेंडमेंट कोड़ा थिला the ADL was further strengthened by 93rd amendment ठीक अछि the law mandates the chairman house to decide on this is right 4th तो correct अछि 4 correct तर our answer हला this is 92nd ठीक अछि our answer है 2 and 4 I hope you are getting ठीक अछि questions देखो prepare for the best सिंपल क्वेश्चन भी ठीक करिबो ठीक अछि मोस्ट स्टाइलिटिक से मो ठीक है हाई लेवल नै गेले यू कैन अंडरस्टैंड ना एटा थिला UPSC 2022 रो क्वेश्चन थिला कोन थिला एटा रिगार्डिंग ADL in India consider the following statement the law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house the law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months बुझी परछ कोन थिला देखो तमे जितला इलेक्टेड होछ ना गोटे इलेक्टेड होछ ना को थ्रू इलेक्टेड होछ गोटे पार्टी थ्रू इलेक्टेड होछ आ गोटे हां गोटे पार्टी थ्रू इलेक्ट होछ आ गोटे नॉमिनेटेड थ्रू इलेक्ट होछ आ उथरे इंडिपेंडेंट थ्रू इलेक्ट होछ ठीक अछि तो द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैनॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विदिन 6 months of being appointed to the house. The law does not provide any time frame with the presiding officer has to decide defection case. एटा कौन आंसर होबो एटा तमे कर आंसर कोन छै तमे कहबो नेक्स्ट क्लास रे कहि दबो हैला the law specified nominated legislator independent legislator कौन कहूछ इट इज ए होमवर्क ठीक अछि एटा भलो क्वेश्चन टा UPSC क्वेश्चन टा भलो क्वेश्चन I can't see your comment. Anti-defection was later about. Can't see your comment right. ठीक है, तुम comment आउथर करो, मैं दिखती भी. ठीक है जी. हाँ, our question. This one. Noradei sanctuary to become India's third home for cheetahs. ठीक है. से क्वेश्चन तो हमें करी मत कोई काली कोई भाला. India रो second home for cheetahs. कौन Noradei? Madhya Pradesh has selected Noradei Wildlife Sanctuary as India's third cheetah habitat after Kuno National Park and Gandhi Sagar Sanctuary. After Kuno and Gandhi Sagar, we have selected Noradei Sanctuary. RB question pre-question में कहीं कुछ सुनो. The cheetah has to be introduced. मैंने कौन? Introduced will come from Namibia and Africa. ठीक है, Namibia and Africa ना हमें cheetah import करूँ. The sanctuary already hosts about 25 tigers, making it the first cheetah site in India. Will be introduced along apex predators. माने ये टाइगर भी थे पर apex माने टाइगर पे माने apex में चीता रो apex चीता टू जो बेसिक करिवे ताले चीता सोर्स फ्रॉम नामीबिया साउथ इंटीग्रेटेड MOUs ठीक अछि कुनो नेशनल पार्क फर्स्ट थिला 2022 रे थिला ऑन द बर्थडे 7 September 17 रे लॉन्च हेतला ऑन द बर्थडे ऑफ ऑनरेबल PM मोदी एंड गांधी सागर डैम गांधी सागर सेंचुरी 2024 implemented jointly by NTCA and Wildlife Institute of India. ठीक अछि एमाने सब कोन टेक्निकल डिटेल्स है इंप्लीमेंट के करछे NTCA करछे खाली NTCA ओनली फंक्शन इज नॉट दैट तमे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा NTCA आल्सो डू व्हाट हमरो
this one project cheetah also ठीक है okay एटा ए क्वेश्चन ना करो which of the following statement regarding project cheetah is Indian is correct. The project cheetah is implemented by NTCA. The cheetahs for the project are being sourced from the Kenya and Botswana exclusively. Nehru Valley National Park is the third site in India where cheetahs are being introduced alongside tigers. The project aims to reintroduce a species that become extinct in India in the late century. A question तमे ठीक करिवो है ना why it is important एबे तुम कहूची try to attempt this question. Anti defection was later brought under 90. Anti defection तो आगुरु आसला 52nd रू आसला ना तापर 91st को पुणी अमेंडमेंट ही आसला ओके ओके ठीक है योर आंसर इज राइट 91st ओके 93rd मु कहि 91st ओके ओके दैट्स राइट सिंस स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा ठीक अछि विवेक एक क्वेश्चन टा कलो द प्रोजेक्ट चीता इज इंप्लीमेंटेड अंडर एनटीसीए एटा ठीक हो ना व्हाट विल बी द आंसर द चीतास फॉर द प्रोजेक्ट आर बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम केनिया एंड बोट्सवाना एक्सक्लूसिवली Kenya and Botswana, right? Dechi na kon dechi. Namibia dechi. Cheetahs can be introduced from the Namibia. Okay. Nehru Valley National Park is the third site in India where cheetahs are being introduced alongside tigers. Eta kon hobo? The project aimed to reintroduce a species that become extinct in India in the late 20th century. Actually, mu chahuji to main answer diyo. Tale mu tuमको गोटे जिनस कहबी actually. और आंसर कौन होगा प्रोजेक्ट चीता इज इंप्लीमेंटेड अंडर एनटीसीए ओके 2 जदि इनकरेक्ट हबो दिस इज इनकरेक्ट दिस इज करेक्ट तापरे मी सी एटा एक्चुअली गोटे जिनस मते कहबार थिला सेति पे मु ए क्वेश्चन ता तुमको टिके ये करछ ओके The project aims to reintroduce a species that become extinct in India in the एडा भी करेक्ट अछि ओके एडा भी करेक्ट अछि Nehru Valley National Park is the third site in India where cheetahs are being introduced एडा करेक्ट होबो कि Nehru Valley National Park हां is it correct कौन लागु छी just take 30 seconds and try to answer B लागु तुमको B DP Mishra is B कहउछंदे ओके तापरे 3 doubt should not okay 3 doubt should not be 3 obviously Nehru Valley National Park no देखो एटा देखो एटी कोन देछि नौरा देई सैंक्चुरी देछि नौरा देई सैंक्चुरी राइट नौरा देई एंड नौरा वैली दैट्स हाउ से मैं क्वेश्चन फ्रेम करतली नौरा वैली नेशनल पार्क कोड अछि वेस्ट बेंगल रो अछि कालिंगपोंग जगह रो अछि कालिंगपोंग रीजन रो अछि सेटा कोन था रेड पांडा पे फेमस थिला बुझी पारछो तमे वर्ड्स को फोकस करो वर्ड्स यू शुड फोकस ऑन द वर्ड्स है ना नौरा वैली नेशनल पार्क इज नॉट फॉर चीता कंजर्वेशन नौरा देई सैंक्चुरी ठीक अछि आई होप एटा तो सब दिन पे मन रहबो द प्रोजेक्ट एम्स टू रीइंट्रोड्यूस अ स्पीशीज दैट बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया दिस इज आल्सो राइट दिस इज राइट 4 ठीक अछि 3टा भूल अछि आर आंसर कौन हम 1 and 4 ठीक अच्छे आर आंसर है 1 and 4 आई होप आई मीन एमती क्वेश्चंस पचारि आगु एंड मु चाहूनी कि तुम कहीं भूल कर तुमको टे क्वेश्चंस रो टेस्ट तुमको जनाऊली राइट ताकि तुम जापर कि क्वेश्चंस केमी आसे ठीक अच्छे सो लेट मी वाइंड अप द सेशन हमें वी विल अटेंड द नेक्स्ट क्लास है ना आगु नेक्स्ट मोर अराउंड मंडे अच्छी 3टा डाउट शुडंट बी 3 इज हाँ ना आई होप क्वेश्चन सेमती आसे एमती पचार दो तुम नौरा दे भावुच देखला नेवरा वैली नेशनल पार्क अच्छी बुझी पार सो जो मुझे मैंने मैंने आई वाज ट्राइंग टू मेक दिस क्वेश्चन मतलब चाहिए कि हाँ यहाँ भी एमती क्वेश्चन भी हो पार यहाँ वेस्ट बेंगल सैंक्चुरी यहाँ बुझी पार हिमालयस पाखे अच्छी सैंक्चुरी सो दिस व्हाट ठीक अच्छे सो आई विल बी वाइंडिंग अप द सेशन मोर ऑलरेडी टाइम आई हैव क्रॉस्ड 1 hour है ना सो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास सो keep preparing well है ना ठीक है गुड नाइट हैव अ गुड डे
एटा बंद करिबा रोशन 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 कैसे